Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the terms related to cofactor. So let's move to the whiteboard. The last lecture we have discussed in detail cofactor. So dear students, what is cofactor? So the non-protein part is a non-protein part required by enzyme to work efficiently. Clear? तो नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली. तो डियर स्टूडेंट्स, अब कोफैक्टर से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. क्लियर? So first of all, the prosthetic group it's very important regarding short questions. So dear students, cofactor non-protein part. हमने बात की थी कि जो most of the enzymes they are protein in nature. They are solely made up of proteins. They are made up of amino acids, proteins. लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको सही तरह से काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो डियर स्टूडेंट्स, वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है? वो प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो मेटालाइन हो सकता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई विटामिन हो सकता है, एनीथिंग बट अदर देन द प्रोटीन. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोटीन. क्लियर? So the first term is the prosthetic group. So these terms are just for the enzymes which require cofactor for their proper working. ठीक है, ये ऐसे एंजाइम्स जो कि सोलली, जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए हैं, जो हैं ही प्रोटीन इन नेचर टोटली, तो उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड फॉर दोज एंजाइम्स विच रिक्वायर cofactors. Clear? So if the organic cofactor is tightly or covalently bonded or attached with the protein part of enzyme is called prosthetic group. Clear? So जो कोफैक्टर मीन्स के जो नॉन प्रोटीन पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोटीन पार्ट के साथ, यानी कि एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ टाइटली कस के या कोवलेंटली बॉन्डेड हो, अटैच्ड हो, सो दैट फॉर्म्स द प्रोस्थेटिक ग्रुप. क्लियर? सो इट्स एग्जांपल्स. It includes heme,
Number 2, the biotin. Clear? So these are some examples of prosthetic groups. Now, dear students, the second one, coenzyme. So it's cofactor, this is coenzyme. इसमें difference याद रखना है, clear? So what is coenzyme? If the non-protein part और cofactor, जिसको हम कहते हैं cofactor, उस non-protein part को cofactor कहते हैं, is loosely attached with the protein part of an enzyme, it is called coenzyme. So dear students, जो coenzymes होते हैं, they are closely related to vitamins. The coenzymes are closely related to vitamins because they act as the raw material for coenzymes. Clear? Dear students, यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल आप ऐड कर लें, FAD, that is flavin, adenine dinucleotide. Clear? अब इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करता चलो. कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट मीन्स कि जो कोफैक्टर है जिसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं, अगर वो लूजली अटैच हो प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम के साथ, उस स्ट्रक्चर को या उस स्टेट में हम इसको कहेंगे कोएंजाइम. और कोएंजाइम्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर closely related to vitamins because the vitamins, they act as, or they are the raw material, they are the basic material from which the coenzymes are formed. Clear? For example, coenzyme A or coenzyme Q. Coenzyme A and coenzyme Q, inshallah, we will learn in the further chapters. इसी तरह से dear students, NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide. Clear? So these are few examples of coenzyme. तो dear students, ये आप इन दोनों में कंपैरिजन आपको क्लैरिफाई हो गया. प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कोफैक्टर टाइटली अटैच हो एंजाइम के साथ, उसके प्रोटीन पार्ट के साथ, और कोएंजाइम जो कोफैक्टर है यदि नॉन प्रोटीन पार्ट है वो लूजली अटैच्ड हो. यहाँ पर मार्क भी कर दो, टाइटली और कोवलेंटली अटैच्ड, और यहाँ पर लूजली अटैच्ड. क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं.
One is apoenzyme. Apoenzyme, if the cofactor means the non-protein part, that is prosthetic group, or its coenzyme are removed, the remaining structure is called apoenzyme. Clear? Like this is an enzyme. Clear? And here it needs its prosthetic group. So let's suppose this is the prosthetic group. If it is removed, it is not attached, and this is substrate. Clear? It's substrate. So what is substrate, dear students? Substrate, it is a substance at which the enzyme acts. Clear? It may be a carbohydrate, it may be a lipid, it may be a protein, etc., etc. Clear? And this is the cofactor. It may be the prosthetic group or it may be the coenzyme. कुछ भी हो सकता है ये, depending upon the enzyme. Clear? तो ये यहाँ से removed है. And this is the enzyme, its protein part. Clear? That is basically protein part. And this is the active site. So over here, this has been removed. ये यहाँ से remove हो चुका है. Now this is called apoenzyme. So we can also say it as it is inactive enzyme. Clear? क्योंकि इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर या इसका जो को एंजाइम है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर यहाँ से रिमूव हो चुका है. अब सबस्ट्रेट अटैच हो भी जाए तो ये जो ब्रिज है, हमने बात की थी कोफैक्टर का क्या काम होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम. जब ये है नहीं तो ब्रिज बन नहीं पाएगा, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सही तरह से नहीं बनेगा. सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर सही तरह से नहीं बनेगा, सो डियर स्टूडेंट्स, जो कैटालाइसिस है, ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो आगे प्रोसीड सही तरह से नहीं कर पाएगी. सो द प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड. द फोर्थ टर्म is, which is related to cofactor, it's hollow enzyme. Hollow. Hollow is from whole, mukammal. Clear? If the cofactor, that means that is prosthetic group, or the coenzyme are attached to the activated enzyme, it is called
होलो एंजाइम मीन्स के जब यही जो कोफैक्टर था वो अटैच हो चुका है, if it has been attached, if it has been attached to the non-protein part, so over here now it is attached, and this one is the substrate. So this is basically the hollow enzyme. We can also say it as an activated enzyme. It is activated enzyme. Clear? तो उसको लेबल भी कर देता हूँ. This is the cofactor. This one is substrate, and this is the enzyme. It's the protein part. Clear? So dear students, in चारों terms के अंदर आप differentiate कर सकते हैं. So prosthetic group if the cofactor is tightly or covalently attached to the protein part. Coenzyme if the non-protein part is loosely attached to the protein part of the enzyme. Apoenzyme if the prosthetic group or the coenzyme they are removed. यहाँ से remove हो चुके हैं जो core enzyme था या जो protein part था. So this state is called as in this state the enzyme is called as apoenzyme. It is inactivated enzyme. And as far as hollow enzyme is concerned, if the prosthetic group that is or the coenzyme which one is required, जो भी उसको चाहिए enzyme को वो उसके साथ attached है और वो enzyme वो मुकम्मल हो चुका है, और this is basically known an activated enzyme. So this is called as hollow. Hollow is from whole. तो ये attached cofactor होगा तो hollow, और removed होगा या detached होगा तो apoenzyme. Clear? और ये स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं, लाइक इन द साइटोप्लाज्म वी फाउंड द एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस. देयर आर एंजाइम्स फॉर glycolysis. And what is glycolysis? That is the breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid. Inshallah, chapter number 11, the bioenergetics, उसमें details इसको study किया जाएगा. कुछ enzymes जो होते हैं वो organelles यानी subcellular जो organelles हैं वहाँ पर depending upon their activity वो मौजूद होते हैं. Like the enzymes for photosynthesis, they are formed in the chloroplast. In the chloroplast, there are the enzymes for photosynthesis. Clear? इसी तरह से in mitochondria there are present the enzymes for cellular respiration, means the aerobic respiration. इसी तरह से in the ribosomes. So ribosomes, they have the enzymes for protein synthesis. So these enzymes, they are the integral part of ribosomes. Clear? ये जो उनसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं, they are the integral part, उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं. So that was about the enzymes. So dear students, hopefully a prosthetic group, coenzyme, apoenzyme और hollow enzyme में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.